Hi everyone, welcome back to another video. My name is Courtney if you don't know me already, and I am from New Zealand. Welcome into the channel. So I came across this video on my YouTube home screen. I was like, you know what, we're gonna save this and watch it for the channel. This one is the Waterfall house in Jalandhar, Punjab, India by Space Race Architects. By the looks of the video, it's a really well designed home, like real bougie. Waterfall, maybe there's a waterfall inside, I have no idea. So yeah, leave any comments down below, you guys, and also leave any video recommendations down below. Hopefully I can get to your request soon, and let's get into today's video. It's the Waterfall house. So there's the waterfall. I wonder how much this is. Wow. I also wonder when it was built. Oh my god! Oh my gosh, guys. Oh my gosh. Oh, that looks so nice. Oh my gosh. They've got an elevator. Oh, this looks just, oh, can you imagine living there? Oh my, that's a dream home, but I would never be able to afford this. Particularly इस residence को हमने एक landmark बनाने की कोशिश की. This, oh my god. एक बड़ा waterfall है, एक छोटा waterfall है. The envy is going through my veins. वो उसकी entries को highlight कर रहे हैं. कहते हैं ना, घर के भाग ड्योढ़ी से पता लग जाते हैं. तो जब ड्योढ़ी में ही होगा तो उसको वो फील आनी शुरू हो जाएगी. I like बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जो भी कोई एंटर कर रहा है घर में, वो हमेशा रिसाइट करता जाता है. अंदर पॉजिटिविटी रहती है. अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज भी कोई गेस्ट लेके आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. Oh, that's beautiful. इनफॉर्मल 14 फीट मॉन्यूमेंटल स्केल से आप एंटर करते हो तो बड़ा सा ट्री आपको जब नजर आता है, यू एंटर फ्रॉम आउटसाइड, फिर आउटसाइड के अंदर एंटर कर जाते हो तो आपको फील ये आता है कि आप आउटसाइड में ही घूम रहे हो. अगर फॉर्मल स्पेस की बात करूं तो वो इनफॉर्मल से बिल्कुल सेग्रीगेटेड है. फॉर्मल स्पेस के बिल्कुल साथ में ही पाउडर रूम है. जो मजेदार फीचर है, पाउडर रूम भी बड़ा ही लेंटर, वहाँ पे सामने टीवी भी चल रहा होगा. वो मिरर के अंदर से ही टीवी चल रहा होगा. पाउडर रूम के बिल्कुल बाहर देयर इज अ शू चेंज एरिया. शूज चेंज करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज बाहर रह जाएंगी. क्लीनिंग का पार्ट भी कम हो जाएगा, जो आई थिंक लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. 90% आप फैमिली लॉन्च में बैठे होगे तो आपको ये फील नहीं आएगा एक छोटी स्पेस में बैठे हो. यू विल फील कि पूरा विड्थ ऑफ द प्लॉट आपको फील आएगा कि लेफ्ट टू राइट आपको दिख रहा है. घर के चारों एक्सेस पे लैंडस्केप कोर्ट्स हैं, तो घर की किसी भी कॉर्नर पे आप बैठे हो तो आपका आउटर स्पेसेस के साथ कनेक्शन और बातें होनी चालू हो जाएंगी. अगर पिछले लैंडस्केप कोर्ट की बात करूं, यहाँ पे बीच में प्लांट देके बर्ड्स के स्कल्पचर ऐड किया. जो लव बर्ड्स हैं वो आपको घर की बॉन्डिंग भी शो कर रही है. घर में जो प्यार बना हुआ है या जो जॉइंट फैमिली का प्यार बना हुआ है, there's always something behind. Oh with the curtains, baby. सर्वेंट जोन की बात करूं तो डोमेस्टिक हेल्प के लिए हमने बाहर से वर्टिकल स्टेयरकेस दी हुई है, बिल्कुल आउटर स्पेस. क्या होता है, क्लाइंट ये सोचता है कि एक साइड पैसेज पूरा देना पड़ेगा जहाँ से पीछे सर्वेंट की स्टेयरकेस. यहाँ पे ऐसा नहीं किया हुआ है, बिल्कुल फ्रंट पे किया हुआ है स्टेयरकेस को, और वो एलिवेशन में ढका हुआ है, जो पता ही नहीं चलता है कि पीछे स्टेयरकेस है. बट स्टिल उससे स्पेस बच रही है, प्लस वो डिजाइन एलिमेंट भी बना दिया. As soon as आप जब स्टेयरकेस से ऊपर आते हो तो एक तरफ सारे बेडरूम्स हैं और दूसरी तरफ जो फ्रंट साइड आ जाती है जहाँ से कॉर्नर पूरा विंडो का आ रहा है. एक तो आउटर स्पेस बड़ी सुंदर दिख रही है और तीनों स्पेसेस वेल सेग्रीगेटेड है. सबसे पहले स्टडी एरिया आ जाता है, उसके बाद पूजा एरिया आ जाता है, दूसरी तरफ छोटी पैंट्री आ जाती है. वो कहते हैं ना, गॉड इज इन डिटेल्स, तो हम स्पेस रेस में डिटेल्स पे बहुत एम्फसाइज करते हैं. हर रूम का फैन बहुत इंटरेस्टिंग है. एक बड़ा ही सुंदर फैन है जो पहले तो दिखने में लगता है एक शैंडलियर और as soon as वो खुलता है तो वो पता लगता है अपने विंग्स फैला रहा है और वो हवा दे रहा है. अगर लॉबी के फैन की बात करूं, वो हेलीकॉप्टर साइज का एक फैन है.
डबल हाइट वाले रूम की बात करूँ तो उसमें मास्टर बेडरूम में हमने यूज़ किया है वुड कार्व्ड फैन। अगर नीचे वाले मास्टर बेडरूम की बात करूँ तो वो 2 विंग्स वाला फैन है। तो आई मीन हर बेडरूम का फैन अपने आप में एक फीचर है। कन्वेंशनली बाथरूम्स बड़े बोरिंग होते हैं, बट मेरा पर्सनल विजन है कि सबसे ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हम बाथरूम्स में ही करते हैं। आपको ड्रेसिंग और जो वॉशरूम है पूरा 1 लाइन में दिख रहा है। आपको ये नहीं लग रहा कि आप एक 6x8 के वॉशरूम में, आपको रादर फील ये आ रहा है कि आप 20x12 वाले वॉशरूम में। प्लस वो लैंडस्केप कोर्ट से फ्रेश एयर, प्लांट की फ्रेश स्मेल आएगी। सीलिंग, लाइट, स्मार्ट होम, हर चीज़ में डिटेलिंग पे काम किया हुआ है। आर्टिफैक्ट्स की बात करूँ, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो हैंड पिक्ड हैं। You can tell that they're hand picked. छोटे प्लांट्स हो गए, बेड साइड के लैम्प शेड्स हो गए, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली फ्लोर के साथ वॉलपेपर कौन सा अच्छा लगना है, वॉलपेपर के साथ सीलिंग का पेंट कौन सा अच्छा लगना है, वॉलपेपर्स के साथ बेड कौन सा अच्छा लगना है, हर चीज़ कहाँ पे लैम्प शेड आएगा, कहाँ पे रग आएगा, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग्स पे ध्यान दिया हुआ है। तो आज ये जो क्लाइंट का आज हमारे पे ट्रस्ट है, इसी बातों के कारण है कि हमने उनकी छोटी छोटी चीज़ों में जाके उनके साथ खुद पेन से लेके हर चीज़ को छोटा छोटा सिलेक्ट किया हुआ है। And it's a hard job to do. Oh my goodness, look at this. And you always have the sound of a waterfall, which is so relaxing. Oh my gosh, how amazing was that? Let's see how much it is. Oh, I can't find the price. If anybody knows how much this house sold for, or was it built for them? I think it might have been built for them, for the family. I'm not too sure. Let me know if you guys know. Millions though, millions of dollars. It was so beautiful. Oh my gosh, that's so like, everything's been so well thought out. Oh gosh, you can tell, right? You can tell everything's been chosen for a reason. This is here for this reason and that reason. This was picked out because of this, this and that. This means that. You know what I mean? Like everything has been thought out so well. Holy moly, that was just, oh, what a beautiful home. That's just crazy. Amazing architecture, amazing design work. One can dream, eh? But I know for sure the closest I'm ever going to get to a house like that is through a YouTube video. But hey, it was really cool to see. My goodness, it's just bloody impressive. Guys, thank you so much for watching today. Give this video a thumbs up if you did like it, and also leave any video recommendations down below. I get a lot of video ideas through your comments. Just leave the title or the subject down below, and go check out my other videos if you haven't already, and I will see you all in my next video. Bye guys.